Hello and welcome to Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. And I am Vishakha Thakur. Cryptocurrency gyrated between positive and negative zone, feeling the pain from market uncertainty that reflects investor sentiments. The market mood was largely influenced by the US central bank's ongoing dialogue about monetary policy and jobs data suggesting that inflation would remain problematic. Geopolitical concerns too weighed on trading activity. Bitcoin slipped below $24,000 mark and was last quoted at $23,831, while Ether too hovered near $1,650. Now let's cut across to Manoj Dhara for in-depth analysis of why Bitcoin is resisting at $25,000 levels. Manoj, we have repeatedly seen Bitcoin finding it difficult to break through $25,000 levels. What factors you are picking up from the market to explain this? Absolutely, Ruchi. Cryptocurrencies actually, were trading lower on Friday as investors remain cautious ahead of the personal consumption expenditures price index data scheduled to be released, which is later in the day. So, if you have seen Bitcoin's prices has been a roller coaster throughout the past 7 days, and it has actually failed to chart any significant increase throughout the period. The core personal consumption expenditure price index, which is the Fed's preferred measure of the inflation, is slated to be released, and economists expect a 0.5% month-on-month gain. Accordingly, there are several other trades that are lined up. That's what analysts are saying. So, marginally hawkish tone in the minutes of the US Federal Reserve's Federal Open Market Commission meeting earlier this month, which was actually responsible for the pause in the markets. Along with the recent spat of the economic data, continue to weigh on the investor sentiments. These are the top concerns weighing on the investor's mind, causing a retreat in cryptocurrencies and the traditional financial markets at the similar time. Meanwhile, the US dollar is likely to face renewed selling pressure if PC figures which match market expectations. That's what analysts believe. And investors are also awaiting the January data on the personal income and consumers' spending that will have further insights into the US consumer sentiment and the way forward for the markets as well. But experts believe that the central banks continuing, which actually indicated with the monetary policy tightening, could dampen the crypto market performance, analysts have opined. And we do believe that these are the important concerns in the markets. Back to you. Thank you so much, Manoj. Moving on to our next news. Tencent is the latest tech behemoth to reduce its bet on the Metaverse by cancelling plans to develop virtual reality hardware. According to 3 people familiar with the matter, this translates to headcount and cost cuts in its Metaverse unit. The Chinese conglomerate had previously announced plans to build both software and hardware for the nascent industry, with plans to hire approximately 300 people to accomplish that goal. According to the report, among the reasons for the cuts were the need for profitability and the need for a large investment. The move follows a widespread reckoning among established tech players about their ambitions to capture market share in virtual worlds. तो रुचि यहाँ पे टेंसेंट ने अपने कुछ मेटावर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से जुड़े एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है, और इसके पहले हमने माइक्रोसॉफ्ट में भी ऐसा ही देखा. तो जो रीज़न यहाँ पे पता चला है वो ये है कि जो भी टेक जायंट्स है वो अब अपना जो शिफ्ट है वो अपना जो फोकस है वो एक तरह से एआई पे ज़्यादा कर रहे हैं मेटावर्स को छोड़कर, क्योंकि माना जा रहा है कि जो एआई है वो मेटावर्स का के लिए बैकबोन साबित होने वाली है. ऐसी खबर थी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी कि उनका जो फोकस है मेटावर्स से ज़्यादा एआई पे है, और कहीं ना कहीं ये ठीक भी है क्योंकि मेटावर्स बिना एआई के कुछ नहीं है. तो एआई का जो रोल है वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है. बिल्कुल. तो आगे बढ़ते हैं. OpenSea is lowering its fees, citing a shift in the NFT ecosystem, and this comes just days after Blur made the case for creators to list on its platform rather than OpenSea. On 17th Feb, OpenSea, the largest NFT marketplace, tweeted that it had begun to see meaningful volume and users migrate to NFT marketplaces that do not fully enforce creator earnings. OpenSea said it was dropping its fee to 0% for a period, while also moving to 0.5% creator earnings model with the option for sellers to pay more.
The marketplace is also allowing sales using competitors with the same policies, so creators will not have to make the choice between receiving earnings on OpenSea or Blur, it tweeted. तो ये बहुत बड़ा मुद्दा एक विशाखा कि क्रिएटर की जो रॉयल्टीज़ हों वो कितनी हो कितनी नहीं हो। अच्छा, एक साल पहले तक तो हर जो सारी मार्केट प्लेसेस थी वो क्रिएटर रॉयल्टीज़ पे कर रही थी, लेकिन अब अचानक लास्ट ईयर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर अचानक सब जो मार्केट प्लेसेस हैं उन्होंने क्रिएटर रॉयल्टीज़ देना बंद कर दिया। और क्योंकि ओपनसी सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, नंबर 1 मार्केट प्लेस है, तो उससे बहुत ज़्यादा जवाबदेही की ज़रूरत थी कि ओपनसी शुड कम आउट कि क्या है क्रिएटर रॉयल्टी पे, क्या उनका स्टैंड है। तो ओपनसी ने भी कभी रॉयल्टीज़ दी, कभी नहीं दी, कभी 5% दी, कभी 2% दी। फिर अल्टीमेटली नवंबर में उन्होंने कहा वो एक रॉयल्टी टूल लेकर आए जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम रॉयल्टीज़ देंगे पूरी, लेकिन अगर कोई जो बाकी मार्केट प्लेसेस है जो रॉयल्टीज़ नहीं देंगे उनको हम ब्लैकलिस्ट कर देंगे। और इसीलिए BOIC ने भी जब अपने सीओ पास लेकर आया तो उन्होंने बहुत सारी मार्केट प्लेसेस जैसे कि लुक्सोरेयर में को ब्लर को इन सबको ब्लैकलिस्ट किया। उसके बाद ब्लर ने, जो कि बहुत ही रीसेंट, बहुत ही अभी लॉन्च हुई, अक्टूबर में लॉन्च हुई NFT मार्केट प्लेस है, उन्होंने इस टूल में एक लूप होल देखा। और वो लूप होल ये था कि अगर जो आर्टिस्ट उनके यानी ओपनसी पे अपनी NFT लेकर आएगा, अगर उस आर्टिस्ट ने किसी और प्लेटफॉर्म पर भी अपनी NFT लिस्ट की, तो फिर वो उस NFT को जो है वो ऑप्शनल कर देंगे रॉयल्टी, यानी कि वो रॉयल्टी फिर होगा कि अगर कोई बायर देना चाहता है तो दे, वरना प्लेटफॉर्म NFT मार्केट प्लेस उन्हें रॉयल्टी नहीं देगी। तो इस टूल के बाद जो है एक तरह से दोनों के बीच में तनाव आ गया, ओपनसी और ब्लर के बीच जंग छिड़ गई, क्योंकि ब्लर ने फिर कह दिया कि जो भी आर्टिस्ट ब्लॉक करेंगे ओपनसी को उनको हम फुल रॉयल्टी देंगे। तो कुछ इस तरह की ये जंग इनके बीच में शुरू हो गई, बैटल शुरू हो गई। और ये इसीलिए भी और तेज हो गई क्योंकि इतना रीसेंट होने के बावजूद ब्लर जो है वो मार्केट शेयर, हाँ, फेब में 2 बार 15 फरवरी को और 19 फरवरी को उसकी जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो ओपनसी से ज्यादा थी, जो कि ओपनसी के लिए बहुत बड़ा धक्का है। तो आई थिंक दैट्स वाई ये जो है ना, ये आगे पीछे शिफ्ट जो है चल रहा है। और इसीलिए क्योंकि ब्लर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे 0 फीस है, कोई आपको फीस नहीं देनी है, ट्रांजैक्शन फीस, एंड प्लस उनकी जो क्रिएटर रॉयल्टीज थी वो 0.5% थी। तो उसी चीज़ को कहीं ना कॉपी करते हुए अब ओपनसी ने भी कहा है कि वो 0% ट्रांजैक्शन फीस कर रहा है जारी, लेकिन लिमिटेड पीरियड के लिए। दैट इज द कैच, लिमिटेड पीरियड के लिए, नॉट फॉर ऑलवेज। एंड उन्होंने भी अपनी क्रिएटर फीस जो है अब 0.5% कर दी है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने इसे ओपन कर दिया हर किसी के लिए, कि जैसे पहले उन्होंने एक ब्लैक लिस्ट लगाया था कि बाकी जो भी क्रिएटर्स उनके पास होंगे वो किसी और किसी और NFT पे मार्केट प्लेस पे नहीं जा पाएंगे। उन्होंने उस चीज़ को ओपन कर दिया कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो क्रिएटर्स हैं वो अपने आर्ट को लिस्ट कर सकते हैं, और किसी बायर को अगर 0.5% से ज़्यादा देनी है रॉयल्टी तो वो दे सकते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो दोनों तरफ से यहाँ पे जंग जारी है। और देखा जाए तो ब्लर का थोड़ा सा पलड़ा भारी भी है, क्योंकि अक्टूबर में ही जैसे आपने बताया कि वो लॉन्च हुआ, लेकिन ब्लर के सामने आने के बाद काफ़ी अच्छा मार्केट शेयर उसे मिला। तो अब देखना होगा कि आगे क्या एक थ्रेट है ओपनसी के लिए ब्लर। बिल्कुल। Moving on, Abu Dhabi has signaled a clear intention to improve its Web3 ecosystem, taking a step away from its dependency on oil and tourism. The latest move is the city's initiative to trigger Web3 growth with a keen focus on Metaverse and blockchain technology. The Hub 71 Plus Digital Assets project is backed by a $2 billion fund earmarked explicitly for startups dabbling in blockchain projects in the city. The latest initiative will offer local Web3 startups several services, including technological, legal, and corporate support. Hub 71 Plus Digital Assets will be based in the Abu Dhabi global market, a free trade zone and the financial nerve center of the city. The scheme has also earned several strategic partners like First Abu Dhabi Bank for research and innovation and blockchain infrastructure provider Fabric. तो बहुत ही अच्छा स्टेप यहाँ पे अबू धाबी ने लिया है, क्योंकि दुबई जहाँ हम देखें तो उसके अपनी ही पहले ही मेटावर्स स्ट्रैटेजी है जो वो चल रही है। 4000 वर्चुअल जॉब्स वो क्रिएट करना चाहते हैं, और इसके साथ साथ काफ़ी अच्छी इकोनॉमी में वो चाहते हैं कि पैसा आए अच्छा खासा Web3 से। तो अभी अबू धाबी, बिकॉज कंट्रीज टू आर बेटिंग बिग ऑन मेटावर्स, तो अबू धाबी जो कि माना जाता है कि टूरिज़्म और ऑयल के ज़रिए ही ज़्यादा उनकी इकोनॉमी पे अच्छा खासा असर पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे Web3 में इनके इस कदम के बाद ज़रूरी है कि और जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस पर ध्यान दें, क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो डिजिटल ही है। तो अब दुबई के बाद अबू धाबी भी फ्रंट पे आ गया Web3 के लिए, और बड़ा फंड जो है वो $2 बिलियन का फंड उन्होंने जो है डॉलर्स का फंड एक्यूमुलेट किया है फॉर blockchain, for Web3, which is very good. So moving on,
Prospective users of an Arbitrum-based decentralized finance project have been left out of pocket following a $2 million exploit. Web3 security firm Certic flagged the incident on Feb 21st following an announcement from the Hope Finance Twitter account notifying users of the scam. Details of the project are difficult to come by. The platform's Twitter account was launched in January 2023 and outlined plans for an algorithmic stablecoin called Hope Token, which dynamically adjusts its supply relative to the price of Ether. Posts on the account allege that a Nigerian national had executed a scam and transferred over $1.86 million to Tornado Cash shortly after the platform went live on Feb 20th. तो यहाँ पर Hope Finance के प्लेटफॉर्म से $2 million का जो है वो हैक हो गया ये, और ये हैक होने के बाद उनके प्लेटफॉर्म को बहुत सारे यूजर्स ने छोड़ भी दिया। उनका जो होप टोकन है वो एक्चुअली एक एल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन है और कहीं ना कहीं उसका जो प्राइस है वो ईथर के प्राइस की मूवमेंट के हिसाब से रिएक्ट करता है। अब बात ये आ रही है सामने कि जो हैकर है उसने उस $2 million में से ऑलमोस्ट $1.86 million जो है वो टोर्नेडो कैश के थ्रू कन्वर्ट कर भी लिया है। तो आई थिंक इट्स टू लेट नाउ कि वो रिकवर तो नहीं कर पाएंगे अपने फंड्स। बिल्कुल, और जैसे कि आपने बताया कि काफ़ी यूजर्स ने प्लेटफॉर्म को छोड़ भी दिया है, तो ये भी एक बुरी खबर है राइट होप फाइनेंस के लिए। Moving on, artifacts recovered from the Titanic's wreckage will be tokenized using blockchain technology as part of a collaboration led by the company that serves as the sunken vessel's steward. A collaboration between RMS Titanic, Hong Kong-based venture Smart Financial Holdings and Web3 firm Artifact Labs will begin tokenizing precious artifacts from the Titanic in order to unlock a plethora of Web3 functionalities. Select artifacts from the sunken Titanic will be preserved as NFTs, allowing the general public to share ownership. RMST has exclusive rights to recover artifacts from the Titanic and its wider debris field from the North Atlantic Ocean's bottom. Venture Smart Financial Holdings will be in charge of organizing the tokenization of intellectual property associated with artifacts. तो अब टाइटैनिक तो Web3 के जो ओशन है उसमें आने वाली है, तो रुचि जी आप क्या ये NFTs परचेज करने वाली हैं? बिल्कुल, मुझे हमेशा से जब से मैंने वो मूवी देखी थी ना टाइटैनिक, आई एम वेरी फैसिनेटेड विद टाइटैनिक एंड अगर कोई NFT, मैं कहूँगी NFT नहीं, मैं तो वो फिजिकल प्रोडक्ट लेना चाहूँगी। कौन सा गेस कर सकती हूँ? That ocean of the heart, वो जो डायमंड नेकलेस था, if I can get that, what better? Wow. So moving on, cryptocurrency exchange WazirX has shut down its NFT marketplace, WazirX NFT. This comes as the crypto industry faces the brunt of the continued downturn. The marketplace's website read, the WazirX NFT marketplace has been sunsetted. You can still trade your NFTs on OpenSea. The crypto exchange OpenSea profile currently has 46,400 items for sale. WazirX said the marketplace did not gain traction. We regret to announce that the WazirX NFT marketplace has been sunsetted. We are proud to have launched India's first NFT marketplace in June 2021, which showcased the work of many creators. Unfortunately, it did not gain much traction, it said in a statement. तो यहाँ हालांकि इट वॉज अ वेरी सडन थिंग कि WazirX ने एकाएक जो अपनी NFT मार्केट प्लेस बंद कर दी, और उन्होंने कहीं ना कहीं कहा है कि क्रिप्टो डाउनटर्न की वजह से हुआ, बहुत ट्रैक्शन नहीं मिला, वो भी एक रीज़न है। बट आई वुड से कि एक बड़ा रीज़न ये है कि हम लास्ट ईयर से देख रहे हैं कि बाइनेंस पर फर्स्ट जो चाइना लोन ऐप का जो पूरा मसला था, जो मुद्दा था, उसकी वजह से कितनी सारी एक्सचेंजेस पर रेड पड़ी, जिसमें से एक नाम WazirX का भी था। तो जब WazirX का नाम आया, उस पर रेड पड़ी, उसके बहुत सारे एसेट्स को फ्रीज कर दिया गया, उनकी ट्रांजैक्शंस के लिए शो पॉज नोटिस मांगा गया ईडी की तरफ से। उसके बाद जो है बाइनेंस ने अपने हाथ पीछे खींच लिए, बाइनेंस ने कहा कि हमारे कोई स्टेक्स नहीं है WazirX में। अब रिसेंटली अभी जनवरी में भी बाइनेंस ने जो है अपनी वॉलेट सर्विस बंद कर दी WazirX के लिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक बड़ा इम्पैक्ट WazirX पे पड़ा है, उनके बिजनेस पे पड़ा है, क्योंकि उनका मेन बिजनेस जो है जो वो उनकी एक्सचेंज है, और NFT मार्केटप्लेस फिर भी मैं कहूँगी उसका एक छोटा हिस्सा था। तो जब आप उनके मेन बिजनेस को इतना बड़ा झटका लगाए, तो कहीं ना कहीं उसका जो इफेक्ट है वो उनकी NFT मार्केटप्लेस पर पड़ा है। और जैसा कि हमने बात की, आपने बताया कि जून 2021 में ही इनका NFT मार्केटप्लेस जो है वो आया था, लेकिन अब इतनी ज़्यादा ट्रैक्शन उसे नहीं मिली, तो उसके बाद एक्सचेंज का भी बिल्कुल आपने यहाँ पे सही रीज़न दिया जो है। So moving on, Binance.US, the American arm of Binance, won the bid for assets of bankrupt crypto lender Voyager in December. The acquisition aimed to distribute crypto assets back to the customers of Voyager Digital as the firm filed for bankruptcy in last July.
The Shangpeng Zhao company had committed $1.022 billion to acquire Voyager assets. However, US regulatory agencies such as the Securities and Exchange Commission, the New York State Department of Financial Services, and the Attorney General of New York, Letitia James, are now opposing the acquisition. The Securities and Exchange Commission requested the United States Bankruptcy Court, Southern District of New York, deny the final approval of Binance's acquisition of Voyager. The SEC believes Voyager has not disclosed who will access the customer funds. Furthermore, the regulatory authority needs more details on the nature of control and safeguarding of the assets. तो जब से Voyager ने bankruptcy के लिए फाइल किया, Binance.US ने उसे एक्वायर किया, लेकिन जो US अथॉरिटीज़ हैं उनका ये कहना है कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखा जाए तो कहीं ना कहीं SEC जो है वो दिख रहा है कि Binance के पीछे एक तरह से पड़ा हुआ है, और ये भी उनका कहना है कि Voyager ने अभी तक क्लियर नहीं किया है कि कस्टमर फंड्स किसे दिए जाएंगे. जी बिल्कुल. तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ. The SEC filed a lawsuit against Terraform Labs and its co-founder DogeCoin has orchestrating a $40 billion securities fraud involving Luna and Terra's algorithmic stablecoin Terra USD. DogeCoin and his company secretly processed over 10,000 BTC out of the company and converted some tokens into cash through a Swiss bank. These allegations are contained in the same SEC lawsuit that accuses DogeCoin and Terraform Labs of fraud and money laundering. According to the complaint, the 10,000 Bitcoin was transferred to a cold wallet that was not hosted on any cryptocurrency exchange. Since May of last year, DogeCoin has been transferring Bitcoin from the cold wallet to a Swiss bank. He's converting Bitcoin to cash in order to continue his evasion of South Korean authorities. तो $40 बिलियन का इतना बड़ा झटका पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को लगा जब टेरा लूना कोलैप्स हुआ, और उसके बाद से जैसे कि हमें पता है कि DogeCoin एक तरह से फरार हैं, नहीं पता कि वो कहाँ है कहाँ नहीं. हालांकि आजकल बात चल रही है कि शायद वो साइबेरिया में हैं. तो उन्होंने 10,000 बिटकॉइंस जो हैं, जो कि बहुत बड़ी रकम होती है, उन्होंने एक कोल्ड वॉलेट में रखा हुआ है और वो जो कोल्ड वॉलेट है किसी एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है. और अब खबर ये आ रही है कि वो धीरे धीरे उस बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं और स्विस बैंक में वो जमा कर रहे हैं. और अब तक कुछ $100 मिलियन जो है उन्होंने स्विस बैंक में कन्वर्ट करके डाल दिया. अभी इसीलिए DogeCoin पे और ज़्यादा एक्विजिशंस अभी लग रहे हैं फिलहाल, और जो है ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने US के बहुत से कस्टमर्स को बेवकूफ़ बनाया, उनको धोखा दिया है. और अभी कहीं ना कहीं वो बहुत एक लाविश लाइफस्टाइल जी रहे होंगे. बिल्कुल. क्योंकि 10,000 में उन पे मुश्किलें बढ़ने वाली क्योंकि 10,000 BTC बहुत बड़ी रकम है. बिल्कुल. So that's all in this episode of the Weekly Wrap. This is me, Vishakha Thakur, signing off. And this is me, Ruchi Sharma, signing off. Do like, share and subscribe to 3.0 TV. Have a great day.